एक वर्ड है वाई नॉट. वाई नॉट का मतलब होता है क्यों नहीं. वाई नॉट, दैट इज इंपॉर्टेंट वर्ड, गुड वर्ड. हमें इनका मीनिंग पता होता है बट जनरली हम इसका यूज नहीं करते हैं. वाई नॉट, क्यों नहीं, लेकिन करना चाहिए. इट्स गुड वर्ड. वाई नॉट, वाई नॉट हैव अ डिनर टुनाइट, क्यों ना आज रात डिनर करते हैं. वाई नॉट गो फॉर अ मूवी, क्यों ना मूवी के लिए चले. वाई नॉट, क्यों नहीं. बनाइए सेंटेंसेस. वाई नॉट, क्यों नहीं. गुड. वाई नॉट हैव अ डिनर टुनाइट, क्यों ना आज रिलैक्स करें. वाई नॉट रिलैक्स एंड एंजॉय द एटमोस्फेयर, क्यों ना आज रिलैक्स करें और एटमोस्फेयर को, एनवायरनमेंट को एंजॉय करें. वाई नॉट गो फॉर अ पिकनिक, क्यों ना आज पिकनिक के लिए चले. वाई नॉट गो फॉर अ मूवी भी आप कह सकते हैं, क्यों ना आज एक मूवी के लिए चले. वाई नॉट हैव अ डिनर, डिनर के लिए चले. तो वाई नॉट, क्यों नहीं, जब हम बोलते हैं तो यू कैन से वाई नॉट. यस. Good, good, very good, Aditi. Excellent. Why not try learning this, learning speaking English? It's need of the day. Excellent sentences. Very good. Excellent. Dull. Dull का मतलब होता है आलसी. Dull. बनाइए sentences dull से. आलसी. He is such a dull boy. He is such a dull boy. वह कितना आलसी लड़का है. और वही अगर कोई शिष्ट व्यवहार कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे वेल मैनर्ड. वेल मैनर्ड का मतलब होता है शिष्ट आचरण करना. वेल मैनर्ड, वेल मैनर्ड से भी बनाइए सेंटेंसेस. शिष्ट, या फिर आप बोल सकते हैं जिसमें बहुत ज्यादा तमीज से जो बिहेव करता है, तमीजदार, जो बिल्कुल वेल मैनर्ड होता है. कई बार हमारे घर में कोई सपोज कोई बच्चा आता है, कई बार हम उसको कहते हैं वाओ ही इज सच अ वेल मैनर्ड चाइल्ड. ही इज सच अ वेल मैनर्ड चाइल्ड. कितना शरीफ बच्चा है, कितना शिष्ट बच्चा है, जो शिष्ट आचरण करता है, तमीज से बिहेव करता है. दैट इज कॉल्ड वेल मैनर्ड. ही इज सच अ वेल मैनर्ड चाइल्ड. वेल मैनर्ड यानी कि शिष्ट या तमीजदार. डल, आलसी. I like well mannered. I like well mannered people. Good. They are dull. Sluggish. Good. Sluggish भी होता है lazy. Nice. Why not go for a dinner? अगर हम किसी की प्रशंसा करते हैं तो उसको हम बोलते हैं एडमायर. एडमायर का मतलब होता है किसी की प्रशंसा या तारीफ करना. I admire him. Yeah, I admire you guys that you are learning, that you have a dedication for learning. I admire my students. मैं उनकी तारीफ करती हूँ. That they have such a good dedication for learning. I admire my students for being so well mannered. वो कितने शिष्ट हैं. They are so good for being so well mannered. Yes, I admire your effort. I admire her work. Thank you. I admire your teaching skills. Thank you so much. Very nice.